to maintain the selectivity. So for this, I'll show you. We'll proceed through an example. Let us take the case here. There is a radial feeder which is connected to different bus bars. And I will first draw it. This is bus bar A, bus bar B, bus bar C. Load current at bus bar A is 200 amperes. Load current at bus bar B is 160 amperes. Load current at bus bar C is 80 amperes. क्लास चल रही है क्या काम था? सर ने भेजा था एक साल का। कौन सा सर? आरपीसी वास्ते नहीं, बाद में है। नहीं, क्यों अभी साइन नहीं करेंगे? I hope you can see it, okay? This is relay A. This is relay B. And the data that is given is bus A, bus B, bus C. Fault current, minimum, maximum. 3500. Okay. So this figure is visible to you? Good. The problem is यहाँ जो हम देखने वाले हैं वो ये है. You are having a radial feeder, and that radial feeder is having the following details. It is having 3 bus bars A, B, and C. The normal load current at bus bar A is 200 amperes. At bus bar B is 160 amperes, and at bus bar C is 80 amperes. And these 3 sections, that is AB and BC, they are protected by a combination of circuit breaker and relay, circuit breaker, current transformer, and relay. Circuit breaker, current transformer, and relay. So this is relay A, this is relay B. The roles assigned are: the relay B must give primary protection to section BC. Here, the relay B must give primary protection to section BC. And the relay A must give primary protection to AB and backup BC. इसका मतलब ये है कि if any fault take place within this zone, if any fault take place in the section, let us say this section BC,
In this section, if any fault take place, this fault has to be detected by relay B, and then the relay B has to act. It should give the trip circuit to this circuit breaker, and the faulty part, that is section BC, must be disconnected. इससे फायदा ये होगा कि अगर कोई भी फॉल्ट बी और सी के बीच में होती है तो ए और बी के बीच में लगे हुए जो कंज्यूमर्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. आई होप इट इज क्लियर टू यू, है ना. बट इन केस इफ रिले बी फेल्स टू एक्ट तो बैकअप में रिले ए को लगना चाहिए, लेकिन रिले ए को ऐसे होना चाहिए अगर रिले बी फेल हो तभी वो एक्ट करे. अब द प्रॉब्लम इज when relay A will operate, it will entirely disconnect with the help of this circuit breaker the section AC. पूरा AC को अलग कर देगी. तो ये एक तरह से this is a type of a mal-operation because fault is taking place between B and C, and if the relay at A operates, it will disconnect the faulty section, that is चूंकि रिले ए अगर ऑपरेट हो गई तो वहां लगा हुआ जो सर्किट ब्रेकर है वो पूरी लाइन को डिस्कनेक्ट कर देगा ए एंड सी के बीच की. So this is not required. So based on this requirement, now we are going to see a case study that how we can coordinate these relays so that the desired action we require may be done. That is, any fault between BC must be protected primarily by RB and backup by RA. Any fault between AB must be protected primarily by RA. समझ में आ गया? Now, how to set these relays? The next important data that is given to us is, जो हमको दिया है वो ये है कि जब इस पावर सिस्टम इंजीनियर्स ने फॉल्ट की स्टडी की तो उन्होंने पाया मिनिमम फॉल्ट करंट और मैक्सिमम फॉल्ट करंट हर बस पार पर उन्होंने कैलकुलेट किया. So they found that the maximum fault, if it takes place near bus B, इसका मैग्नीट्यूड है 3000 एम्पियर्स. सॉरी मिनिमम, दिस इज मैक्सिमम, करेक्ट. और बस बी पर जो मिनिमम फॉल्ट होगी उसका मैग्नीट्यूड 2000 एम्पियर्स है. सिमिलरली बस ए पर मैक्सिमम फॉल्ट विल हैव अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4000 एम्पियर्स and minimum fault of 3500 amperes. I hope my sound may be clear to you, isn't it? And my screen may also be visible to you. Okay? है ना, स्क्रीन दिख रही है मेरी आपको? Good. So let us start the problem. Now, how to proceed for this problem? The first part is we have to set or select. We have to set the relays. Now, what is the meaning of setting up of relays? So setting of relay means we have to select the pickup values for each relay. We have to set or we have to select the pickup value of each relay. Now, how to select the pickup value of any relay? So the rule is we have to decide what is the current transformer ratio and what is the plug setting multiplier to be set for each relay. If you remember the last class, then I have explained you that how to select the pickup value of any relay. So the rule is the relay must sense the minimum fault current. At the same time, it should not operate for maximum normal load current. हिंदी में इसका मतलब ये है कि किसी भी रिले को हमें इस तरह से सेट करना है कि वो रिले जो है वो
किसी भी कंडीशन में ऐसे ऑपरेट हो कि वो कम से कम फॉल्ट को तो सेंस कर सके, लेकिन अधिकतम से अधिकतम लोड करंट को वो लोड करंट प्लस ओवरलोड में ऑपरेट ना हो, क्योंकि लोड इज ए नॉर्मल कंडीशन, इजंट इट? इज इट क्लियर? इट नॉट? Load is normal, fault is abnormal. So the simple rule is operate for fault and do not operate for loads and overloads and permissible overloads. Permissible overload का मतलब होता है कि आप कितना परसेंट ओवरलोड हो जाए उसको आप नॉर्मल मान. So just see here you can see, suppose let us take the case that fault takes place just near bus bar B. Now, why I am going to take the example of a fault? Look, we have to coordinate these relays. तो हम अगर जैसे जैसे फॉल्ट सोर्स से दूर होती जाएगी तो फॉल्ट का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा. मान लो हमारा पूरी ट्रांसमिशन लाइन के दो ही सेक्शन है, बी एंड बी सी, और दो रिलेस और दो सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं. तो मान लो वर्स्ट केस सिनेरियो में हम यहाँ से, और हमेशा रिले का कोऑर्डिनेशन पीछे से शुरू किया जाता है. द रूल इज अगर बीसी में कोई फॉल्ट हो तो रिले बी को ऑपरेट होना चाहिए and it should disconnect the section BC. So we always start from the tail end of the feeder. हम पीछे से शुरू करते हैं. So if you start from the tail end of the feeder and assume that, let us say bus bar B के बिल्कुल नजदीक fault होती है. Let us assume that any fault takes place near bus bar, just near to it. And you can see that the current transformer is located just near to this bus bar. Okay. I hope you can understand, isn't it? Yes, sir. You can see it now. Now see just. If there is a fault, if there is no fault, अगर कोई fault नहीं होती है, तो normal current of 80 ampere is flowing along this direction from B and C. It is going and it is feeding the load. तो 80 एम्पियर का लोड जो है वो नॉर्मली फ्लो होता है, जो कि इस करंट ट्रांसफार्मर से होते हुए जाएगा, और करंट ट्रांसफार्मर उस करंट को सेंस करके रिले बी को देगा, और रिले बी इसको नॉर्मल मानना चाहिए. सो जस्ट टेक द केस दैट the normal, or we know that the normal load current at B is 80 amperes, isn't it? Now, just see. Let us say we can have a permissible overload of 25%. हमारे पास ये मान के चले कि लोड 25% परमिसिबली बढ़ा सकते हो आप, क्योंकि लोड तो हमेशा लोड नॉर्मली कांस्टेंट नहीं रहता. मान के चलते कि 25% और इससे भी ज्यादा हो जाए तो उसको नॉर्मली मानेंगे. सो फॉर रिले बी नॉर्मल कंडीशन क्या होगी? नॉर्मल 80 एम्पियर का करंट प्लस 25% ऑफ 80 एम्पियर. क्लियर? फॉर रिले बी आई कैन गो यू शो यू. रिले बी के लिए नॉर्मल कंडीशन क्या होगी कि 80 एम्पियर का करंट फ्लो हो, और अगर 25% ओवरलोड भी हो जाए तो 25% का ओवरलोड होने के बाद भी इसको नॉर्मली माने. सो दैट इज व्हाई the normal condition should be 80 amperes plus 25% of 80 amperes. So if you have a calculator, so 80 amperes plus 25% of 80 amperes, so 25% of 80 amperes is 20 amperes. So it comes out to be 80 plus 20 is equal to 100 amperes. So relay B, for this relay B, 100 ampere is a normal current. Now let us select a current transformer CT.
Where? Here. We have already selected this current transformer. I hope you can see my mouse moving. देख सकते हैं? This one. Yes, sir. So this current transformer should have, or we should select it to have a ratio of 100:1. That means हर 100 एम्पियर को 1 एम्पियर में कन्वर्ट कर देगी. So the CT ratio, the current transformer ratio is 100:1. And let us set this relay at 100% setting. The meaning of this is रिले का जो रेटेड सेकेंडरी करंट है उसकी 100% की वैल्यू के बराबर रिले को सेट कर दिया जाए. उससे क्या मायने है कि जब इस सेक्शन में नॉर्मली 80 एम्पियर प्लस 20 एम्पियर 100 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो वो 100 एम्पियर को सीटी कन्वर्ट कर देगा 1 एम्पियर में, क्योंकि हमने सीटी रेशियो 100:1 लिया है. और रिले जो यहाँ बी लगा हुआ है इसको 1 एम्पियर पर सेट करके रख दिया है. मतलब इस रिले बी में जब भी 1 एम्पियर से अधिक करंट होगा देन इट शुड ऑपरेट, अदरवाइज इट शुड नॉट ऑपरेट. Is it clear? So in this way you can say that the plug setting of relay at B is set to be 100% or at 1 ampere. Clear? Now let us see the next relay. The previous one. This relay A. Now for relay A, normal current should be 160 ampere goes here and 80 ampere goes here. है ना? So the normal current that will flow through this current transformer which is connected to relay A is sum of 160 plus 80. Remember 200 इससे पहले, इसके बाद हम इसके बाद की कंडीशन की बात. So 160 plus 80 is the normal current for the relay which is connected through a current transformer in the section between A and B. Now let us do the calculation. At relay A, normal current is, as I have already told you, you can see it, 160 plus 80. So 160 plus 80 plus 25% overload of this 160 plus 80. Always remember 25% is the permissible overload which can be tolerated. So if you can do this calculation, 160 plus 80 comes out to be 240 plus 25% of 240 is 60. So it comes out to be 300 amperes. So 300 amperes is the normal, you can say the current that will flow through this relay or through this CT when everything is normal. So what we do is now let us select this CT which is connected, which is situated here, to be having a CT ratio of 300:1, and let us set it also at 100% setting. 100% setting का मतलब है कि उसको 1 एम्पियर पर सेट करके रख दिया है. 1 एम्पियर पर सेट करने का मतलब ये है कि जब प्राइमरी में 300 करंट फ्लो होगा सीटी में तो वो सीटी इट विल कन्वर्ट इट टू 1 एम्पियर and 300 amperes corresponds to normal condition. So therefore secondary में 1 ampere corresponds to normal condition. तो रिले A के लिए जब रिले A में CT के द्वारा 1 ampere करंट सप्लाई किया जाएगा, that means it is normal. उससे अगर करंट ज्यादा बढ़े then it is abnormal. Clear? So with this theory we have achieved the first task, that we have set the relays for their पिकअप वैल्यूज. हमने उनको सेट कर दिया कि कितने करंट के बाद उनको पिकअप या घूमना शुरू कर देना चाहिए. नेक्स्ट थिंग, दीज रिलेज आर ऑल कैन से IDMT रिलेज. ये सब IDMT रिलेज है. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IDMT रिले? The important characteristic of IDMT relay is that their operating time reduces as their operating quantity increases. उनका समय कम होता जाता है ऑपरेटिंग घूमने का जब उनका
ऑपरेटिंग क्वांटिटी बढ़ती जाती है, या यूं कह सकते हैं जैसे जैसे इन रिले में करंट बढ़ेगा वैसे वैसे इनका समय जो है वो कम होते जाएगा। तो आईडीएमटी रिले में फीचर एक तरह से बेनिफिशियल भी है। किस तरह से बेनिफिशियल है? बिकॉज मोर सीवियर द फॉल्ट, less will be the time taken by the relay. That's why we choose IDMT relay. Now, remember, one very important thing will happen in these relays. एक बहुत खास चीज होगी इन relays में. That is, suppose I'm again drawing that diagram. Just you can see this, isn't it? For the sake of convenience, I'm again drawing the diagram. Imagine any fault is taking place just near to bus bar B. कहीं यहाँ पर एक fault हो गया just near to bus bar B. So this fault, which is taking place just near to bus bar B, it will be fed from the source itself. So the fault current will flow from the source. It will go through bus bar A. It will pass through this CT. It will cross the bus bar B, and that fault, let us say, it goes to the ground. So the fault current flows both the CT at A and CT at B. समझ में आ गया ना? तो अगर फॉल्ट करंट दोनों में फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो दोनों रिले उसको सेंस करना शुरू कर देंगी, और रिले ए को हमने 300:1 वाली सीटी से कनेक्ट किया है और रिले बी को 100:1 से सिलेक्ट किया है। और नॉर्मल कंडीशन में ये रिले ऑपरेट नहीं होगी क्योंकि हमने इनको इसी तरह से सेट किया है। लेकिन इफ यू सी द कंडीशन फॉर फॉल्ट, so let us say the fault is taking place at bus bar B. So, and we are taking the condition for, let us say, minimum fault. Let us say that कम से कम fault हो रही हो 3000 amperes की. Let us say that the relay B, the minimum fault is taking place. So what is the value of the minimum fault at bus bar B? It is 2000 ampere and maximum fault is 3000 amperes. और let us say हम इसको और थोड़ा सा वैसा कर दें कि हम इसको सीवियर मोस्ट कंडीशन के लिए टेस्ट करते हैं। लेट अस टेस्ट दिस रिले फॉर सीवियर मोस्ट कंडीशन। सीवियर मोस्ट कंडीशन मतलब जब सबसे खतरनाक फॉल्ट हो तब क्या कंडीशन होगी। अगर खतरनाक फॉल्ट को प्रोटेक्शन दे सकती है तो छोटी फॉल्ट को प्रोटेक्शन दे पाएगी कि नहीं वो भी चेक करेंगे। सो लेट अस टेक द केस दैट maximum fault is taking place at bus bar B. So what is the magnitude of maximum fault current at bus bar B? It is 3000 amperes. So let us start our calculation that maximum fault is taking at bus bar B. Maximum fault is taking place at bus bar B, which is equal to 3000 amperes. Now we all know that the CT, which was connected to relay B, was having a CT ratio of 100:1, isn't it? जो CT रिले B पर लगी हुई थी उसका CT रेशियो 100:1 था और फॉल्ट करंट कितना है 3000 एम्पियर्स। तो अगर 3000 एम्पियर का करंट प्राइमरी में फ्लो होगा इस CT में तो सेकेंडरी में कितना हो जाएगा 3000 डिवाइड बाय CT रेशियो, isn't it? So it should be equal to 30 amperes. Clear? Is it clear? Yes, sir. Good. So for a severe fault at bus bar B, which is equivalent to 3000 amperes,
that current will be converted with the help of the CT to 30 amperes. Now let us calculate the plug setting multiplier PSM of relay B. Now why I am doing this exercise? मैं plug setting multiplier क्यों calculate करूं? Because ultimately मेरा उद्देश्य है, my aim is दोनों रिले बी और रिले ए के बीच में एक इतना सिलेक्टिव टाइम इंटरवल रखना जिससे कि जो मैं डिजायर्ड चाहता हूं वो हो। और जो मैं चाहता था मैं बता देता हूं आपको फिर से कि अगर कोई भी फॉल्ट बी और सी के बीच में हो। सर हाँ जी, यस सर सॉरी आई मिस लास्ट कॉन्सेप्ट सर, वो सीटी रेशियो वाला जो कॉन्सेप्ट है सर, मैं क्लास से बाहर हो गई थी तो सुन नहीं पाई मैं। ओके। तो प्रियंका व्हाट आई विल डू इज, वैसे तो मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देता हूँ, फिर भी आपको कहाँ से मिस हुआ बताइए मुझे। सर ये जस्ट लास्ट जो 1 मिनट पहले आपने बताया था ये, कि जो मैक्सिमम फॉल्ट करंट है बस बी में वो 3000 एम्पियर है और जो उसका सीटी रेशियो है वो 100:1 है। उसके राइट, बाद यस गुड। सर। तो अगर देखिए अब सीटी क्या करता है, करंट को ट्रांसफॉर्म करता है। तो अगर जी किसी भी सीटी का प्राइमरी करंट मालूम हो और उसका सीटी रेशियो मालूम हो तो उसका सेकेंडरी करंट मालूम किया जा सकता है, isn't it? यस सर तो जी रिले जो आपकी जो आपकी रिले बी से जुड़ी हुई जो सीटी है जहां पर ये मेरा माउस घूम रहा है इसमें, इसका सीटी रेशियो 100:1 था। और हमने ये माना कि फॉल्ट ये मत समझिए कि ये सीटी बस बार से बहुत दूर लगी हुई है, सीटी बिल्कुल यहाँ, वो तो डायग्रामेटिकली दिख रही है। अगर बस बार बी के बिल्कुल नजदीक कोई फॉल्ट होगा तो वो सीटी सेंस करेगी उसको, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे फॉल्ट को सीटी सेंस करेगी। ओके, वो तो यहाँ हमें सिंबॉलिकली ऐसा बता रहे हैं कि बस बार यहाँ और सीटी यहाँ लगी हुई है। टेक्निकली देखा जाए तो ये हो सकता है 100 किलोमीटर लंबी लाइन हो और सीटी मुश्किल से, अगर सीटी की लंबाई देखो तो 1 मीटर क्या 50 सेंटीमीटर की भी सीटी का गोला नहीं होता वो, इट इज नेग्लिजिबल। बट डायग्रामेटिकली हमें कैसा लग रहा है, सीटी भी उतनी बड़ी और लाइन भी उतनी बड़ी, समझ में आ गया। कोई भी फॉल्ट जो बी और सी के बीच में हो पूरा पूरा इस सीटी के द्वारा सेंस किया जाएगा। तो इस सीटी का सीटी रेशियो 100:1 है और इसमें मान लो फॉल्ट करंट जो हमने देखा कि वो 3000 एम्पियर का फॉल्ट होता है, तो 3000 एम्पियर का फॉल्ट को ये सीटी ट्रांसफॉर्म कर देगी 3000 बटे सीटी रेशियो, दैट इज इक्वल टू 30 एम्पियर। क्लियर? ओके सर ओके। हाँ। अब ये एक्सरसाइज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ये पता करना है कि दोनों रिलेज के बीच में टाइम का इंटरवल कितना रखा जाए। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी रिले कितना समय लेगी ऑपरेट होने में, उसके हिसाब से दूसरी रिले को कोऑर्डिनेट करके। मैंने अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि देयर आर टू फैक्टर्स व्हिच विल डिसाइड द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ एनी रिले। दोस टू फैक्टर्स आर द फॉल्ट करंट एंड सेकंड इज योर टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग। दो चीज होती है। फॉल्ट करंट मतलब उस रिले में कितना फॉल्ट करंट की वजह से, कितना फॉल्ट करंट हम दे रहे हैं जिसकी वजह से उसमें टॉर्क पैदा होगा और वो घूमना शुरू करेगी। जितना बड़ा फॉल्ट उतनी फास्ट घूमेगी, जितना फास्ट घूमेगी उतना कम समय लेगी। एक तो वो फॉल्ट करंट। दूसरा टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग जो हमारे हाथ में होता है कि रिले का बैक स्टॉप हमने कहाँ एडजस्ट करके रखा हुआ है ताकि हाउ मच टाइम द रिले विल टेक प्लेस। इफ यू रिमेंबर, मैंने शायद मैं आपको यही बता के बताता हूँ कि ये जो रिले होती है इनमें कैसी डिस्क लगी होती है और इनमें एक साइड पे एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है और एक साइड पे फिक्स कॉन्टैक्ट होता है। ये जब घूम के आता है तो यहाँ से टच करता है कॉन्टैक्ट और ये तो एक सर्किट क्लोज हो जाता है ऑपरेट। अब जब कोई फॉल्ट ना हो तो ये वापस घूम के अपनी जीरो पोजीशन पर आ जाती है। अब इमेजिन करो ये जीरो पोजीशन यहाँ से शुरू होती है तो यहाँ से लेके यहाँ तक घूमने में वो मान लो कोई समय लेती है। अब इस जीरो पोजीशन को यहाँ बीच में ला दिया जाए, मतलब वो यहाँ तक ना जाए, बस यहीं रुक जाए। अब कोई भी फॉल्ट होगा तो वो यहाँ से शुरू करेगी, यहाँ से शुरू करेगी तो आधा समय लेगी। सो दैट मीन्स जो 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 आप ये टाइम सेटिंग करते हैं रिले की, वो करते हैं बेसिकली उसका होम स्टॉप क्या है, कहाँ पर आके वो आखिरी में रुकती है, वो एडजस्टेबल की वो किया जा सकता है एक नॉब की मदद से। यू गेट माय पॉइंट? और यस सर मैं उसको और अच्छे से समझाऊं, एक डिस्क पूरा घूमेगी तो कुछ समय लेगी, आधा घूमेगी उसी कंडीशन में तो आधा समय लेगी। पूरा कब घूमेगी, जब वो जीरो से शुरू करेगी। अगर उसका जीरो ही आधे पे ला दी जाए तो वो आधा समय लेगी। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग। दैट इज फॉर द सेम फॉल्ट, since it has to cover only half the distance, therefore it will take half the time. For the same fault, if it has to take the full revolution or full circle, it will take full time. So time multiplier setting is basically this adjustment of this back stop. So your relay, the operating time of relay will have to, it will be decided by two things. First is fault current, next is time multiplier setting. Time multiplier setting is in your hand, you can adjust, but fault is not in your hand. आपको नहीं पता किस magnitude का fault होगा. Now the rule which you have to follow is
द रिले विच इज एट द रिमोटेस्ट एंड दैट इज रिले बी, चूंकि इसको किसी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं होना है, इसके पीछे की रिले इसके से कोऑर्डिनेट होगी, इसके आगे कोई रिले नहीं लगी हुई, तो इसको हम कम से कम ऑपरेटिंग समय दें, क्योंकि द बेसिक रूल ऑफ प्रोटेक्शन इज क्लियर द फॉल्ट एज फास्ट एज पॉसिबल। कोई भी फॉल्ट को जल्दी से जल्दी दूर करो, क्योंकि अगर आप फॉल्ट को दूर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली दैट फॉल्ट में प्रोपेगेट टू अदर कंपोनेंट्स। सो obviously relay B has not to be coordinated with any other relay, therefore it has to be given the minimum time to operate, and let us assume that that minimum time for operation to the relay B can be given by adjusting its time multiplier setting to minimum value, यानी कि रिले बी के टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग को कम से कम पर सेट करके रखो, जिससे फट से कॉन्टेक्ट लॉस कर ले। क्लियर? नाउ द थिंग इज, रिले बी के टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग को अगर मैं 1 रखता हूं तो इसका मतलब इट विल कंप्लीट 1 सर्किल। अगर रिले बी के टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग को 0.5 रखता हूं तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम हाफ, इट विल टेक हाफ द टाइम। अगर मैं इसको 0.25 रखता हूं तो इट विल कवर 0.25 क्वार्टर ऑफ द सर्किल, और मिनिमम वैल्यू ऑफ 0.1 10%। केवल ये डिस्क है, केवल उसको वापस जो उसकी होम पोजीशन है उसको बिल्कुल आखिरी से शुरू ना करके बिल्कुल यहीं से शुरू करो, ताकि तट से अपना कांटेक्ट क्लोज कर ले। आगे समझ? क्लियर? Yes sir, yes sir. So the thing is, for relay B, let us set the time multiplier setting to minimum value, that is 0.1. Okay, clear? Now let us do our calculation. हमने देखा था for relay B, we were having a fault current of 3000 amperes. The CT ratio was 100:1. So secondary current comes out to be 30 amperes. So for relay B, I have to find the time of operation. कितना समय लेगी ऑपरेट करने में? अभी मैंने जो सेलेक्ट किया ये टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग, ये मैंने सेटिंग की है, ये समय नहीं है, ऑपरेटिंग टाइम नहीं है, इट इज द टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग। मतलब कोई भी फॉल्ट हो वो रिले जितना समय लेती उसका 10% लेगी, क्योंकि हमने टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग को बहुत कम पे सेट करके रखा हुआ है। क्लियर? नाउ सिंस आई हैव टोल्ड यू that these relays are IDMT relays, and you have to by heart remember a mathematical equation that operating time of any IDMT relay is given by 0.14 into time multiplier setting divided by plus setting multiplier to the power 0.02 minus 1. Is it clear? This is an empirical formula. It says that the operating time of any relay depends upon how much is the time multiplier setting and what is the magnitude of the fault current, which is represented by plug setting multiplier PSM. मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको बताया था कि plug setting multiplier is a mathematical term which is nothing but the ratio of actual current flowing into the relay divided by relay setting. If I go to the next page and if I write again, plug setting multiplier is the ratio of actual current in any relay divided by the relay setting. Now just see what happens. जब 3000 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था फॉल्ट की वजह से, तो 3000 एम्पियर का करंट कन्वर्ट हो गया, कितना बन गया? 30 एम्पियर। तो रिले बी में फॉल्ट होने पर कितना करंट फ्लो हो रहा है? 30 एम्पियर। और रिले बी को हमने की पिकअप वैल्यू हमने कितनी सेट करके रखी थी? 1 एम्पियर पर। याद है मैंने शुरुआत में न्यूमेरिकल जब शुरू किया था तो यहीं से किया था कि रिले बी को 1 एम्पियर पर सेट करके रखेंगे, ताकि वो रिले नॉर्मल कंडीशन और एबनॉर्मल कंडीशन के बीच के डिफरेंस को वो कर सके, डिफरेंशिएट कर सके।
या यूं बोल सकते हैं रिले बी के लिए 1 एम्पियर इन इट 1 एम्पियर करंट जब रिले बी में फ्लो होगा which corresponds to 100 ampere in its primary and 100 ampere in the primary corresponds to normal load current plus 25% overload. So in a you can say that a current of 1 ampere which is flowing into the relay B which is coming from the CT corresponds to a normal condition or कोई भी current greater than 1 ampere should be abnormal condition for relay B. Clear? So coming to our plug setting multiplier for relay B, जब मैक्सिमम फॉल्ट हुआ था तो उसके सीटी ने 3000 एम्पियर के करंट को कितने में कन्वर्ट कर दिया था 30 एम्पियर में, और रिले को एक्चुअल में सेट कितने कर रखा था 1 एम्पियर पर, तो उसका प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा 30/1 बराबर 30. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस PSM? इट मींस PSM इज अ मल्टीपल. इट गिव्स एन इंफॉर्मेशन अबाउट कि आपकी रिले में आपकी सेटिंग का कितना गुना करंट फ्लो हो रहा है. क्लियर? What is the meaning of a PSM 30? What is the meaning of PSM 30? The meaning of PSM 30 means in your relay, the actual current that is flowing into the relay is 30 times its normal setting. उसको सेट करके रखा था 1 एम्पियर पे, मतलब 1 एम्पियर से जब भी करंट ज्यादा हो तो रिले घूमना शुरू हो जाए, और अभी इस वक्त उस रिले में उसका 30 गुना फ्लो हो रहा है 30 टाइम्स. Why? Because fault has taken place. Clear? So now we know that. Again, I am writing the formula जो पिछले पेज में बताया था. Operating time of any relay is 0.14 times time multiplier setting divided by plug setting multiplier to the power 0.02 minus 1. अब हम किसी भी रिले का ऑपरेटिंग टाइम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बशर्ते हमें टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग मालूम हो और प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर मालूम हो. तो रिले बी के लिए टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग था 0.1 और प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर जो अभी निकाला मैंने ये है 30. सो फॉर्मूला में पुट करते हैं 0.14 into 0.1 divided by 30 to the power 0.02 minus 1. Clear? So I am having this calculation with me. So इसको जब solution करोगे तो it comes out to be approximately 0.1988 seconds. It comes out to be approximately 0.1988 seconds, which is equal to approximated to equal to 0.2 seconds. Now I am taking a break. अब इसका मतलब क्या हुआ है? What I can infer, मैंने जितने भी calculations किए उससे मैं क्या क्या conclude कर सकता हूँ? My conclusion is relay B has been set for a minimum operating time, therefore उसका time multiplier setting 0.1 रखा. We have considered the severe most condition, that is the maximum fault is taking place at bus B, which was 3000 amperes. Given this condition, ये रिले बी को कम से कम समय पर ऑपरेट होना चाहिए और मैक्सिमम फॉल्ट हो रही है, उस कंडीशन में हमने कैलकुलेट करा तो रिले 0.2 सेकेंड्स ले रही है ऑपरेट होने. Is it clear? I hope my sound is clear. Yes, sir. Good. So the final conclusion is for the most severe most condition, relay B is taking 0.2 seconds to operate. Now our task is to find the operating time of relay A, which must be coordinated with relay B, जिससे कि जब फॉल्ट बस B पर हो तो पहले B ऑपरेट हो, बाद में रिले A ऑपरेट हो. और इसको मैं एक हर क्लास में एक बड़ा अच्छा एग्जांपल से बताता हूं. सपोज दिस इज सम VIP पर्सन. देख रहे डायग्राम VIP पर्सन का? कैन यू सी इट? Yes, sir. ये उसका पहला प्रोटेक्टिव जोन है जहां उसके ब्लैक कैट कमांडोज खड़े हुए हैं. ब्लैक कैट कमांडोज जो कि बड़े हैंडसम से आर्मी के ऑफिसर्स हैं, है ना, जिनको हम देखते हैं पिक्चरों में. उसके आगे एक और घेरा है सुरक्षा का, जहां पर CRPF के जवान AK-47 लेके खड़े हुए हैं. और उसके बाद में
हमारे प्यारे पुलिस वाले डंडा लेके खड़े हुए। क्लियर? तो अगर हमारा रोल क्या है, मेन क्या है, प्राइमरी प्रोटेक्शन टू द वीआईपी मस्ट बी गिवन. Primary protection fails, then secondary protection must come. Secondary protection fails, then obviously the tertiary protection should come. If there is a direct attack on this VIP, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे होता है अटैक, तो हम ये थोड़े एक्सपेक्ट करेंगे कि पुलिस वाला दौड़ के यहाँ बचाने आएगा. सबसे पहले तो इसको ही ऑपरेट करना है ना. ये जो ब्लैक कैट कमांडोज खड़े ये बचाएं. ये अगर बेचारों गोली लग गया फिर सीआरपीएफ वाले हैं, सीआरपीएफ ने फिर पुलिस वाले हैं, क्योंकि अगर गलती से पुलिस वाले पहले पहुंच गए तो वीआईपी बचेगा ही, isn't it? Clear? So here also the same thing. और उससे डिस्टर्बेंस भी होगा. भाई इस आदमी को पीआईपी को प्रोटेक्शन देने के लिए केवल 4 ब्लैक कैट कमांडोज की जरूरत थी और उसको बचाने के लिए अगर ये इतने सारे पुलिस वाले यहाँ घेरा तोड़ के आएंगे तो इस सर्किल के अंदर जो बाकी लोग हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे. इतने सेक्शन में बचाना है तो इतने सेक्शन को कॉर्डन करो ना, बाकी सबको क्यों घेर के और आपको करो, इतने को आइसोलेट कर दो बस, जितना जितना वीआईपी. तो हम यही चाह रहे थे कि हमारा जो फॉल्ट हो रहा था अगर वो इस सेक्शन में हो रहा है तो केवल यही सेक्शन डिस्कनेक्ट हो, अननेसेसरी इस सेक्शन को क्यों डिस्कनेक्ट किया जाए पूरे पूरे को. तो इस सब को ध्यान में रखते हुए हमने अभी ये कैलकुलेट कर लिया दैट हमारी जो रिले बी थी, अगर बस बार बी के नजदीक फॉल्ट हुआ तो रिले बी 0.2 सेकेंड्स ले रही है. अब अगर ये रिले बी किसी कारण से ऑपरेट ना हो तो रिले ए को ऑपरेट होना चाहिए एंड ऑब्वियसली नेचुरल होना चाहिए कि रिले ए का जो ऑपरेटिंग टाइम है वो रिले बी से ऑपरेटिंग टाइम ज्यादा होना चाहिए. रिले ए का ऑपरेटिंग टाइम मतलब उसी फॉल्ट में रिले बी 0.2 सेकेंड्स लेती है तो रिले ए को 0.2 सेकेंड से ज्यादा समय लेना चाहिए अपना कॉन्टैक्ट क्लोज करने में. नहीं तो अगर रिले ए को आपने ऐसा सेट कर दिया कि वो कम समय ले रही तो वही होगा कि रिले बी से पहले रिले ए ऑपरेट हो जाएगी एंड दैट विल बी अ माल ऑपरेशन. सो नाउ वी हैव टू फाइंड दैट हाउ मच टाइम or how much time you should allocate to relay A so that a proper coordination could take place. Now the constraint is fault हो चुका है. हम कंडीशन कौन सी देख रहे हैं कि बस बार बी पर मैक्सिमम फॉल्ट हो चुका है 3000 एम्पियर का और वही फॉल्ट ए से भी होकर जा रहा है. रिले ए में भी वो करंट फ्लो हो रहा है. जब रिले ए में करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो उसकी डिस्क ने भी घूमना शुरू कर दिया था, लेकिन उसको घूमने में का हमें इतना समय देना है कि वो बाद में ऑपरेट हो, बी पहले ऑपरेट हो जाए. तो अल्टीमेटली हमको ये निकालना है कि रिले ए का टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग कितना सेट करें जिससे कि रिले बी और रिले बी के ए के बीच में सिलेक्टिव टाइम इंटरवल मेंटेन रहे. आई होप जो मैंने अभी तक पढ़ा है इट मे हैव बीन क्वाइट क्लियर टू यू. Yes, sir. Good. So we will proceed this numerical in the next class, and I will share with you the this recording, lecture recording, this PPT material, and आज की तारीख कितनी है 14th Feb. इसका नाम क्या था, रिले कोऑर्डिनेशन. So now I will be going to the role platform and I will be giving you the attendance, isn't it? So should I end my class? Thank you.
थैंक यू सर। जी सर।